Antes de la llegada del cónsul general Imran Ali Chaudhry, solo había una mujer entre el personal de consulado y ahora tenemos más mujeres que hombres. La persona detrás de este cambio es el señor Imran Ali Chaudhry, honorable cónsul. Le pedimos que suba a compartir el escenario con nosotros y nosotras. इमरान अली चौधरी साहब से पहले इस कौंसल खाने में सिर्फ एक खातून काम किया करती थी और आज ख़वातीन स्टाफ मेंबर्स की तादाद मर्दों से ज़्यादा है। ये दिन ख़वातीन के नाम किया गया है, तो आपकी भरपूर तालियों में मैं इनसे मुल्तमिस हूँ कि ये अपना विजन हमारे साथ शेयर करें। और एक और हमारी टेक्निकल सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी मेहमान हैं, कैटेगरीज़ हैं, तो कैटेगरी 5 से मैं गुजारिश करूँगा कि वो बैक स्टेज तशरीफ़ ले आएँ। आपकी भरपूर तालियों में कौंसल जनरल इमरान अली चौधरी। Good afternoon to all my Spanish and Pakistani guests. Thank you for coming here today to celebrate something unprecedented, that is the Pakistani woman. You might not know, or it might not be evident to us, that the Pakistani girl and the Pakistani woman is probably more central to Pakistani society than the Pakistani man. We might not know it. हमारे यहाँ जो लड़की है और जो खातून है वो हमारी सोसाइटी में ज़्यादा सेंट्रल हैं. Not only do they recite the Holy Quran, they recite naats, they cook food, they work in the morning and in the evening. I will demonstrate to you girls who work the night shift in the taxi sector. So please give a big round of applause to the Pakistani woman. There are a lot of misconceptions about Pakistan. Pakistan के बारे में बड़ी गलत फहमी है. This sound coming at the back. May I please have it closed? There are many misconceptions about Pakistan. If I were to speak about the Pakistani woman, I would have to go on for hours till the night today without referring to anything, and my time would still not suffice. I'll just take you through some glimpses of the Pakistani woman before we come to celebrate them. And I would again request category 5 to please get at the backstage. Yes, please.
I'd like to have the PowerPoint before I play any more videos. So you've seen these ladies in the video. Pakistan has more than 300 women parliamentarians in provincial, National Assembly and the Senate. Not one, not two, but 300 or more. I can't even show all their pictures here. Next slide, please. Next slide, please. They not only represent the Air Force, सिर्फ Air Force में वो teaching, not only for teaching another, but they are now becoming fighter pilots in the Pakistan Air Force. Next. Next. This is the first Pakistani Shaheed fighter pilot. तो लड़कियों ने, पाकिस्तान की फाइटर पायलट्स ने ना सिर्फ जहाज़ उड़ाए हैं बल्कि शहादतें भी हासिल की हैं. Next. They have risen to the general rank, and I'll show you soon, in the Pakistan Army. Not a major, not a lieutenant colonel, not a brigadier, but generals. There are tens of brigadiers in the Pakistan Army. On the right, there are two generals. They take part in operational exercises. They remain equal to men in all fighting arms of the Army, Air Force, and the Navy. Next. Next. They now form, I was the director of the Civil Services Academy. They now form a third or a half of the Pakistani civil servants recruited every year. जो CSS करते हैं उसमें आज तक अब लड़कियां हर साल पहुंच गई हैं. लड़कों के मुकाबले में किसी ज़माने में 10 या 12 या ऐसी होती थी. Pakistani female athletes are Olympic level participatory swimmers. Yes, girls do swim in Pakistan. And the Pakistan national cricket team has won many laurels for Pakistan all across the world. And today, it will be my honor to present to you the female cricketers who are sitting on that side. They'll come on stage following in the footsteps of the Pakistani cricket team. वो हॉकी भी खेलती हैं और आजकल की परफॉर्मेंस में मेरा ख्याल है आदमियों की हॉकी टीम से हमारी फीमेल हॉकी टीम की परफॉर्मेंसेस बेहतर हैं. दे प्ले फील्ड हॉकी एज वेल. There are hundreds of Pakistani authors all across the globe who write, who express their opinions, who dominate the television, who dominate cinema. These are just some of the writers, the Pakistani female writers, जिनको मैंने यहाँ display किया. Next, please. This is the first Muslim world's cartoonist, Nigar Nazar. She was here in Spain a few days back. Her character Gogi is seen by millions of people. Next. Let's have the first video, please. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. This is. 1, 2. Please stop it now.
These were not just girls wearing the Pakistani color. This was Pakistan's national cricket team. Yes, they can have fun, they can enjoy music, and they are allowed to dance in Pakistan as well. I am amazed by his embrace of refugees, Pause, please. his Pause, commitment please. to appointing Canada. Pause, please. All of you, probably आप सबको मलाला यूसुफजई का पता है. आपको शायद ये ना पता हो कि कनेडियन पार्लियामेंट में जब उन्होंने तकरीर की थी, तो कनेडियन पार्लियामेंट 72 times, the National Assembly, the Senate and the audience, वो 72 दफ़ा खड़े हुए थे. When Malala Yousafzai addressed the Canadian Parliament, the Canadian Parliament stood up and paid homage to her 72 times. I am just going to display a very short slide here. Yes, please. I am amazed by his embrace of refugees, his commitment to appointing Canada's first gender-balanced cabinet, and his dedication to keeping women and girls at the center of your development strategy. We have heard so much about Prime Minister Trudeau, but one thing has surprised me. People are always talking about how young he is. They say that he is the second youngest Prime Minister in Canadian history. He does yoga, he has tattoos, and a lot more. And while I was coming here, everyone was telling me, like, shake Prime Minister's hand and, like, let us know how he looks in reality. And people were just so excited about meeting Trudeau. I don't think anyone cared about the Canadian honorary citizenship. While it may be true that Prime Minister Trudeau is young and he is young head of government, I would like to tell something to the children of Canada, that you don't have to be as old as the very young Prime Minister Trudeau to be a leader. I'm like on still page 7, so there are like a lot left. So if you do the standing ovation again and again, you'll get tired. Just to let you know, there's a lot left. But I want to share my story that I want to tell the children of Canada that when I was little, I used to wait to be an adult to lead. But I have learned that even a child's voice can be heard across the world. And to the young women of Canada, I want to say, let's step forward, raise your voices, and the next time I visit, I hope to see more of you filling these seats. Next, And to please. the men of Next, please. Pause. चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बात Pause. करना चाह रहे हैं आप. Pause. So, this is a movie depiction of the first Surgeon General of the Pakistan Army. Pakistan Army की पहली Surgeon General, General Nigar पे है. Umair, what would you call a Surgeon General in Spanish? Cap del sector de medicina, ¿no? The head of the army's medical corps, a corps commander, and this is just a very small depiction. जब मैं pause कहूँ तो pause कर दीजिएगा. Please start. चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बात करना चाह रहे हैं. ऑपरेटर लाइन पे हैं. प्लीज. अस्सलाम वालेकुम मैडम, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपसे बात करेंगे. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. जनरल निगार, आपको बहुत मुबारक हो ऑन बिकमिंग द फर्स्ट फीमेल लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ आवर आर्मी. मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमेशा की तरह आपका इंतखाब मुत्तफिका तौर पर मेरिट पर हुआ है. अ ट्रूली वेल डिजर्व्ड प्रमोशन. यू टेक ओवर द सर्जन जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्मी. वेल डन एंड कीप इट अप. थैंक यू सर.
बहुत बहुत शुक्रिया। Pause. मैं Let's give a big round of applause to Pakistan's first Surgeon General. Next, please. Just a pause. Pakistan has had wonderful foreign ministers, but as a foreign service officer, never have I served with a more cogent female foreign minister who could speak well without preparation, who saw all her notes. She is no longer in government right now. We have a wonderful foreign minister, but just a glimpse of the female foreign minister of Pakistan. Gentlemen, I represent a country, I represent a government which has shown a deep, abiding commitment to pursue the peace process with India in an unprecedented way. I remember when I landed in New Delhi and I was asked what I was there to achieve, and I said that I used the words of not a Pakistani diplomat but an Indian bureaucrat. I wish that the peace process was to become uninterrupted and uninterruptible. That's Pakistan's foreign minister, female foreign Gentlemen, minister. I represent a country. Please pause it. Please go to the next video now. That's about Shahid Benazir Bhutto. जब आप दो वज़ीर आज़म को पाकिस्तान आने से रोक नहीं सके, मुझे बताओ काफ, मुझे बताओ सियासी यतीम, आप धांधली कैसे करेंगे 8 जनवरी? कोशिश करेंगे? कैसे उनने पहले कोशिश की इमरजेंसी लगाने की? Pause. जब आप दो As you all know, the Islamic world's first prime minister who gave her life for democracy in Pakistan. Next, please. आपके ज़हन में औरत की आज़ादी का तस्वुर क्या है? क्या इसका मकसद मर्द पर गलबा है? Pause. नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा मकसद ये If I were to name one Pakistani woman who I respect most of all in my life, and who also left this world a few months ago, I think, few years ago, it's this woman. It's not the office holders, it's not the big names, it's this one woman who gave all her life for democracy and the right of women in Pakistan. So I salute Asma Jahangir today, in front of you, in front of TV cameras. Yes, please. है कि वो अपने फैसले आप कर सके और उसके फैसलों को वही तवज्जो दी जाए जो कि बाकी लोगों के फैसलों पे दी जाती है और वो खुद अपनी एक सोच रख सके। मर्दों की कौन सी बात सबसे बुरी लगती है? आमरीत, ये कि हर बात जो वो कहते हैं वो सच है। आपकी जिंदगी की कौन सी हसरत बाकी है? जाहिर है इंसान की बहुत सारी हसरतें होती हैं, मगर छोटी छोटी हसरतों को लेके इंसान नहीं बात करता। मेरी ये हसरत है कि पाकिस्तान में सही जमहूरियत आए, यहाँ पे सही इंसाफ हो। Pause. Umair, could you just give a one-line summary of what she said? Según el señor cónsul, digamos, si una persona que él admira realment com a dona és la senyora Asma Jahangir, que va morir fa un parell d'anys, i que, resumint el vídeo, diguem, el presentador li pregunta què és el que més no li agrada a la dona, aquesta actitud dictatorial. Diguem, i un dels seus desitjos era democràcia plena en Pakistan. Next, please. आप 20 सालों से इंसानी हकूक के लिए काम कर रही हैं। क्या इस हवाले से कोई बेहतरी आई है? बहुत बेहतरी आई है। 1980 में आप मेरा इंटरव्यू नहीं ले सकते थे, हम ये अदारे नहीं बना सकते थे, हम अखबारों में नहीं लिख सकते थे, अखबार खबर नहीं दे सकते थे, आप जुलूस जलसे नहीं कर सकते थे, हत्ता के साइक्लोस्टाइल भी बना थी। औरतों को उनके हकूक से आगाह करने के लिए
उन्होंने कई पैरा लीगल मराकज़ कायम कर रखे हैं। पैरा लीगल मरकज़ पर औरतों से मिलने के लिए जाती हैं। 2 और 4 से Next, please. Next, please. आप 20 सालों से इंसानी हकूक Next, के लिए please. आपके दफ्तर में गैरत के नाम पर एक कत्ल हुआ। गैरत तो एक मकामी कॉन्सेप्ट है, आप इसके क्यों खिलाफ हैं? हमने अपनी प्रैक्टिस में इतने साल औरतों को बिकते देखा है, बापों को बेटियों को औरतें बेचते देखा है, अपनी बेटियां बेचते देखा है, बहनों की जायदादें छीनते देखा है, तब इनकी गैरत कहाँ जाती है? और माफ़ कीजिए, यहाँ पे ये जो ख़वातीन हैं जो कि एक्सप्लॉइट होती हैं, जो कि यहाँ पे जो प्रोस्टिट्यूशन में हैं जिसको आप कहते हैं, तो क्या वो किसी की गैरत नहीं है? उनको आके क्यों नहीं ले जाते अपने घर? मगर ये गैरत नहीं है, ये एक हुक्मरानी है औरत के ऊपर कि वो बोले क्यों, वो आवाज़ क्यों निकाले, वो हमारे ख़िलाफ़ कोई ख्वाहिश क्यों जाहिर करे। ये हमारी मलकियत है, ये गैरत नहीं है, ये मैं समझती हूँ एक बारबरियत है। Pause. Please turn on the lights. I could go on and on. The struggle for women's rights today has been launched by many unknown names like Asma Jahangir. So ladies and gentlemen, it was an honor for me to stand here and present to you the incredible woman of Pakistan. Thank you very much.